बच्चों, गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस एग्जाम मास्टर पे। आज एक अमेजिंग सा लाइव सेशन हम करने वाले हैं। इस लाइव सेशन के अंदर आज हमारे साथ जुड़ने वाली है स्क्वाड्रन लीडर ज्योति मैम। और ज्योति मैम से हम आज बात करेंगे। शी हैज बीन अ टेक्निकल ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स। शी जॉइन थ्रू ईकेटी एग्जाम। उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से मैम का जर्नी रहा, क्या चीजें थी जो उन्होंने की so that she could join the Air Force as an officer. And ma'am has already joined. Jai Hind ma'am, very good evening to you. And ma'am की रिक्वेस्ट आ चुकी है। लेट्स जानेंगे मैम की जर्नी और इंस्पायर करेंगे आपको अबाउट ज्वाइनिंग द इंडियन एयरफोर्स। तो बहुत बहुत स्वागत है सब बच्चों का। यू गाइस कैन शेयर दिस सेशन आल्सो along with your friends. Hi ma'am, good evening. Hi Shivam, can you hear me? Yes ma'am, एकदम perfectly. All right, absolutely fine. Hello, Ma'am, everyone welcome who to has joined. this amazing session. और बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने प्लान किया, Thank you so much. बट होपफुली वी विल बी एबल टू टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम योर जर्नी एंड मजा आएगा। बच्चे भी काफी सारे जुड़े हुए हैं, तो उस सब से के बारे में भी अपन बात करेंगे। मैम आई थिंक थोड़ा ना आवाज मेरा एको हो रहा है, यू कैन ऑल्सो डिस्कनेक्ट द बर्ड्स के अलावा भी बात कर सकते हैं, मतलब ब्लूटूथ के अलावा भी आवाज आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, बट आई एम मोर कंफर्टेबल लाइक दिस। अच्छा ठीक है, ओके। सो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू प्लीज शेयर द सेशन टू योर फ्रेंड्स so that more number of people can watch it. Today we are going live with squadron leader Jyoti ma'am. Jyoti ma'am has been a technical officer with Indian Air Force. जानेंगे मैम की जर्नी। तो सबसे पहला सवाल, जैसा कि मैं हर ऑफिसर से पूछता हूँ, एंड एवरी सीनियर ऑफ माइन लव टू आंसर दैट, मैम व्हाई एयर फोर्स, व्हाई डिड यू जॉइन द एयर फोर्स, और कैसे स्टार्ट हुआ है, इनिशियल कैसे चालू हुआ है जर्नी आपका मैम? ओके शिवम, मैं आपके पहले सवाल का पहले आंसर दूंगी, और वो उसका एक रीजन बहुत ड्रामेटिक है और एक रीजन बहुत ही जो आई थिंक सबका होता है कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में कोई होता है या आपने कभी कोई ऐसी चीज देखी होती है कि जो आपको इंस्पायर करती है। और मेरा जो फर्स्ट रीजन है, जो शायद मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था कि मैंने अपार्ट फ्रॉम टीवी मूवीज, हम सभी ने बॉर्डर देखी है ऑफ कोर्स, और जो भी ऐसी ऐसी मूवी आती थी या कोई ऐसा प्रोग्राम आता था जिसमें इट्स अबाउट डिफेंस, राइट, तो वो बहुत मुझे एंटाइज करता था और बहुत शौक से मैं देखती थी। ऑफ कोर्स मैं और मेरा भाई दोनों सभी देखते हैं। बट आई स्टिल रिमेम्बर, मैं मेरे पेरेंट्स एक बार समर वेकेशन में, और मुझे याद नहीं है व्हाट वाज द एज, पर मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, और हम लोग समर वेकेशन पे घूमने गए थे एंड वी वेंट टू बैंगलोर मैसूर। यू वोंट बिलीव दैट टाइम बैंगलोर ओनली, आई मीन बैंगलोर मैसूर ऊटी, इट वाज लाइक दैट। So while coming back, when and our train was Rajdhani to Delhi, right? So while okay, we reached on time, everything happened. Then मेरा भाई बहुत छोटे थे, तो we settled down everything. So होता है ना, एक बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि चलो अभी बैठ गए हैं तो अब क्या करें, अभी तो स्टार्ट होने में बहुत टाइम है। तो अभी हम जाके जो बोगी होती है उसके बाहर मैं और मेरा भाई दोनों ऐसे घूम रहे हैं, देख रहे हैं। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, और वो मेरी लाइफ की ऐसी मेमोरी है जो मुझे आज तक बहुत एक्यूरेटली याद है। वो ऐसा मोमेंट था जो शायद हम मूवीज में देखते हैं कि एक हीरो चल के आता है और वो सब, आपको पूरा ध्यान बस उस बंदे को देखने में होता है। इट वाज लाइक दैट कि एक कोई आ रहा है यूनिफॉर्म में, ब्लूज पहने हुए थे, और तब तो पता भी नहीं था, लेकिन ये आई कुड मेक आउट कि ओके कोई आ रहा है सामने से चल के, और उस जेंटलमैन ने ब्लूज यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और मैं सिर्फ, कहते हैं ना सब कुछ रुक जाता है, वो वक्त थम जाता है और आप सिर्फ देखते हो और सडनली वो आपके सामने, और आई वाज अ किड एंड, और वो आपसे सिर्फ इतना बोलता है एक्सक्यूज मी, और आप साइड में हो चुके हो, रास्ता दे देते। और वो मेरे जहन में इतना ज्यादा इंग्रेव था वो मेमोरी। और शायद मैंने अपने और अंदर जाने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया मैंने ऐसे ऐसे किसी को देखा और वो यूनिफॉर्म में थे, राइट। और अब यू नो आफ्टर ज्वाइनिंग फोर्सेस मुझे समझ में आया, आईएएफ को ज्वाइन करने के बाद वो क्यों थे स्टेशन पे, वो यूनिफॉर्म में क्यों थे, क्या कर रहे होंगे या कर रहे थे। तो आई थिंक वो आंसर था। और दूसरा एक रीजन था शायद क्योंकि मैं थर्ड जनरेशन हूँ, फौजी थी, अभी तो मैं यही कह सकती हूँ बिकॉज मैं जी मैं
तो मैं एक वो फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा उसी तरह का रहा है, तो शायद इसीलिए वो इंक्लिनेशन हमेशा से थी, और यही मेरा एक सबसे बड़ा मोटिवेशन था, इंटरेस्ट, कि मुझे इंटरेस्ट भी उसी चीज में था, तो दैट्स हाउ आई लैंडेड देयर। तो या अमेजिंग मैम, मतलब अच्छा लगा वो विजुअलाइजेशन पहले से आपके दिमाग में चल रही थी मूवी, यू सॉ समवन। यस, वो मूवी थी, यस, और वो इतनी इतनी सॉलिड मेमोरी है मेरी, शायद मुझे और कुछ आगे पीछे ना याद, मुझे exactly याद है कि मैं वो डोर बोगी का ऐसे हैंडल पकड़ के उसके ऊपर झूल रही थी, कोई सामने से आया और मैं सिर्फ उस बंदे की, बिकॉज दैट जेंटलमैन वाज इन यूनिफॉर्म, सो मुझे अभी भी याद है कि वो एग्जैक्ट चीज क्या थी। मैं और मेरा भाई दोनों, इनफैक्ट नॉट ओनली मी, वी बोथ वर लुकिंग एट हिम लाइक सम मैजिक हैपनिंग, दैट वाज द थिंग। या तो अच्छा, थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग जाके पूछ रहा हूँ, आपने जो ऑफिसर को देखा, लाइक यू सॉ समवन इन यूनिफॉर्म, तो वो कौन सी मतलब एयरफोर्स में कौन सी ब्रांच के थे? आई हैव नो आइडिया, लाइक उस टाइम में मैंने सिर्फ ब्लूज देख रहे थे, मुझे ये नहीं पता था उस उम्र में कि ओके यहाँ पे अगर श्रेया लगी है तो उसका क्या मतलब है, या क्या, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बट मैंने एक जेंटलमैन को हमने देखा था जो उसी बोगी में एंटर कर रहे थे, एंड अ बस few ओनली। year down the line you was in the same. Yeah, I mean, yeah, that's true. And then I could relate. Okay, why was that person there, and what was he doing there, and क्यों क्या, और why in uniform, especially. Yes. Exactly, amazing मैम, amazing, मतलब इतनी solid memory है आपकी तो। नहीं And नहीं, as you, आई थिंक सारी मेमोरीज में से मुझे वो पर्टिकुलर चीज याद है कि शायद कुछ चीजें आपके दिमाग में इतना बड़ा इम्प्रेशन छोड़ती हैं, और शायद इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो मुझे ये दो चीजें सॉलिड रीजन थे मेरे शायद ज्वाइन करने के, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट भी है, yes, और वो इंटरेस्ट कहीं कहीं ना कहीं आप वो अपने इंटरेस्ट को जब कोई चीज देखते हो कि ओ दिस यू कैन रिलेट, राइट, अभी तक जो आपने सिर्फ मूवीज और टीवी में देखा है और आप रियलिटी में देखते हो। exactly मैम, amazing मैम। तो यहाँ पे जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, if I have to tell you मैम के बारे में, and तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये सेशन मैंने प्लान किया है, एंड देन आई मैम को मैंने मैसेज किया, मैम आई वांट टू हैव अ पॉडकास्ट, I saw your journey and we both connect because both of us are engineers. So when ma'am passed out, I just landed into my engineering. So ma'am is basically 4 years senior than me, and I was also curious. And let me tell you, ma'am, you are the first officer from AFTC who is in this podcast. So we will be, yeah. So once upon a time, I wanted to become an aero engineer also when I couldn't make it to the flying. तो मेरे पास aero का बचा था, EKT क्लियर किया था मैंने भी, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो आता है मैम मेरा, कि यू गॉट योर इंस्पिरेशन एंड देन यू इन द एयरफोर्स, वंस यू वेंट टू योर एसएसबी, मतलब एग्जाम तो आपने पास कर लिया, एसएसबी की जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताओ, मतलब हाउ वाज योर एसएसबी, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जो एकदम मेमोरेबल रहा? मेरी लाइफ की ऐसी कोई स्टेज नहीं है जहाँ पे कुछ मेमोरीज, बहुत स्पेशल मेमोरीज ना हो। I'll tell you something. When I was in college, I gave exam for my UES entry, University Entry Scheme. यस, एक अभी भी होती है, right? And of course for army, that was my first exam, which that was the first step which I took towards defense, right? तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों ने एग्जाम दिया और हम दोनों ही क्लियर किया हम दोनों ने, और उसके बाद हम दोनों का इंटरव्यू हुआ, एंड आफ्टर दैट वी गॉट बोथ ऑफ अस गॉट अ कॉल लेटर फॉर एसएसबी, राइट, एंड आई वेंट देयर, यू वोंट बिलीव दैट, आई थिंक दैट वाज द सेकंड और थर्ड डे when सारी physical activities, when you have to like run like multiple obstacles you have to complete within a time frame, right, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, and yeah, and while running, and there's one step wherein you have to jump from one step to another, and the moment I jumped from that, there, and I landed badly. Honestly, I injured myself, and right after that I was not able to even walk. I was sent back then and there because I was on two people's shoulder literally, and I badly got hurt there, and I came back. I couldn't even finish my interviews and anything. So I don't count it as a SSB experience because it was like halfway. So that is one. And secondly, of course, I gave my EKT exam, and after that I was called for the SSB. I went for my SSB. I think I went to Varanasi because for in SSB,
and that was the most memorable time. I still remember. I was just number one. I was number one there, and the most interesting part in my SSB was my interview. It started with food and it ended with food. Even the interviewer, even I was thinking while giving the interview, why is he asking about recipes? I don't know why. I mean, he asked me like 3, 4 recipes. What do you like? Why do you like? Achha, okay, if you say that you make it, then how do you make it? Tell me the recipe. Why not this? Why that? Though that kind of discussion happening, at the end. And after 45 minutes or so, it ended with food only. So that was something like when I came out of the room, everybody asked what did you do? I was like, it was all about food only. What is it? Of course, here and there, like many other things we asked, but the main focus was on food. So that's how my journey was. And I still remember, when they announced the result after the last day, and I was literally in my heart somewhere, my heartbeat was like really high, and at that point of time, the moment he said, okay, chest number one, एक ऐसा moment था शायद मुझे सुनाई भी नहीं दिया. And it was chest number one, and I was like, then I got up, okay, I'm chest number one, and the moment I said, I was literally shivering, because आपने जिस मोमेंट का इतना साल मैं कह सकती हूँ, आपने इतना लंबा इंतजार किया है उस एक मोमेंट का, और वो आ गया है. Right. और शायद आप उस मोमेंट को शायद यकीन नहीं कर पाते. ओके, इट हैज हैपेंड, the hard work paid off at that point of time. So that was wonderful. And of course, Varanasi was a beautiful city, and all of us, in fact my entire course, we were 14 of us were selected, and all are my course mates. Lady of Great, man. Amazing, man. And Varanasi, mere liye was not so lucky. I got screened out every time I went to Varanasi. But amazing board, and I have basically students who got recommended from Varanasi. मैंने कहा मेरा बदला ले गया ना. So kind of that's true. SSB, like AFSB or SSB, it leave you with some memories, very great memories for life. And Great memory. I am today in my life. My SSB attempts played a very major role, vital role. आप एक बार select हो जाते हो, फिर आप नहीं होते हो, फिर आप आके इंट्रोस्पेक्ट करते हो, you figure out where did you went wrong, and then you went again, you did the exam again, and then it's an amazing journey in life. Shivam, I'll tell you something. My so-called, not fully done SSB, the first SSB which I went for, for army, wherein I injured myself, right after that, and whatever the gap was there in between, the second SSB, which was for Air Force, in that time period, I literally trained myself that I don't commit such stupid mistake which I committed there. Not jumping in the correct way, and I injured myself. So that was like, okay, I can't, afford to have another mistake at this point of time. So I used to practice a lot. इतना मैं jump करती थी, you won't believe. मेरे घर के पास एक college है. मैं और मेरे father दोनों वहाँ जाते थे. Running and jumping मेरा daily का होता था. और मुझे इतना जंप करवाते थे that, और मैंने बहुत जंपिंग की प्रैक्टिस की थी कि मैं अब नहीं एक भी ऐसा, I will not leave any stone unturned. मतलब वो आपने सीखा ना वो चीज की, यार एक बार गलती कर चुके हैं दोबारा नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे लाइफ इज एट स्टेक. when life is at stake, just cannot commit mistakes, and this is what I want to tell the students or the viewers who are watching कि life will not be easy or smooth always. And as Jyoti ma'am is a live example कि कैसे एक attempt में ना होने के बाद उन्होंने overcome किया अपने आप को, and then she got selected, and then they served a very marvelous career of 10 years in the forces, and then here we are doing the podcast, listening to ma'am about the journey. तो give up नहीं करना है, आपको जाना है और मेहनत करनी है सबको. तो मैम एसएसबी के बाद you went to Air Force Academy, and then AFA is an amazing academy and amazing place. Your lifetime memories, and you cannot forget those memories. Initial phase में आपको लगेगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, and you have somewhere I was mentally prepared for that, and I prepared my physically I was prepared. I prepared my body for all of it. Of course, I was not aware what all going to happen there, but
but at least I knew, okay, running is like, running will be there. You have to prep well. In fact, जितने भी आप हमारे viewers हैं, अगर वो clear कर चुके हैं अपने एग्जाम, उनका मेडिकल हो चुका है, मेरिट आ चुकी है, they're just waiting to join, I'll tell you, for all of them, please prepare. Prepare your body, because it will help you very, very much. It will help you so much when once you land there, you'll understand this. Okay, you will be like, okay, thankfully I prepared well. That's why I'm not getting a kind of shock. My body's not in shock. Okay, what has happened overnight? Like whole day you'll be running, you'll be on toes, right? So why not to prepare if you have time? Especially for all the non-swimmers, because I have faced it a lot. I was a non-swimmer, and that was like nightmare for me to clear my swimming test, honestly. And I could confess that. So that's why if you are a non-swimmer, please, please, if you have time in hand, आप जाके करिए, स्विमिंग सीखिए, ताकि वहां पे आपकी लाइफ और आपके टेस्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाए. एग्जैक्टली मैम. तो कोई एएफए की मैम ऐसी मेमोरी बताओ जो मतलब आपने, मतलब एएफए हम व्हेन गो टू द एकेडमी ना, एक कल्चरल शॉक तो लगता ही है. हमारी लाइफ एकदम सिविलियन में चिल चल रही है, कोई लोड नहीं है. आप वहां जाते हो, यू वेक अप एट टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, यू गो टू बेड एट अ पर्टिकुलर टाइम, लाइट्स आउट एट 11 और 10. पूरे दिन आप बसते रहते हो, आपकी रगड़ा पट्टी होती रहती है. एंड देन यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि यार ये क्या हो गया, सिट हैज हैपेंड नाउ. हाउ डिड यू सर्वाइव दैट? वहां पे कोर्समेट्स का क्या रोल रहा, और आपका इनर मोटिवेशन क्या रहता था व्हाइल ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग डेज में? Okay, okay, I'll tell you something. When I cleared my SSB, I went for my medical. So I was anemic, right? So my medical was not cleared in the first go because I was anemic. They asked me to increase my hemoglobin and all of that. So after they give you 1 month time, and then after again you have to go for the review, right? So in that, because of that process, so the joining was on 3rd of January, right? All my course mates, those who cleared, I mean, the medical was also okay. So they got their call letter. I got it like on, I think, 5th of January. And I reported 5th or 6th of January, and I reported there on 8th. So I landed there on 8th. So it was like, yeah, 5-6 days of delay, right? By the time my course mates were already having a good time of their life. And the day I landed there, I was handed over to our women cadet captain. Okay, you come joining like that. And when I entered, I was like another world altogether. And when you go inside and you see so many people running around, they're doing some, kadam tal and all of that. And you're looking at them, some drama is happening, or something is happening. Everybody's in whites and shorts, white t-shirts and shorts, wearing shorts and doing all the physical, ragda patti, what was happening there. And I'm standing there with my bag and with all the colorful clothes and looking at them like, acha, kya chal raha hai? And after that, okay, I was taken to, okay, this is going to be your squadron, this is going to be your room, this is, I mean, all the uniform and everything was given to me. And at night, I was like, okay, you get ready, you put 100 pins in your hair, so your hair cannot go here and there, and all of that. And one of my seniors, she taught me how to make bun because I didn't know that. And उसके बाद सब बना के हम पहुंच गए. And I still remember left and right मेरी जो लेडी ऑफिसर्स मेरे स्कॉन की थी. बिकॉज मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है. नाइट मस्टर चल रहा है, फॉल इन हो रखा है, सारे स्कॉन्स के सारे ऑफिसर्स, आई मीन द फ्लाइट कैडेट्स खड़े हैं. ओ एक नया बंदा है. बहुत सारे लोग जो मुझे भागते हुए मिले इन बिटवीन, तुम यहाँ क्यों आ गई हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है. ओके ओके, जो मिल रहा है और जिनको मैं एसएसबी से जानती थी, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो क्यों आई है यहाँ. That was the reaction because जो initial 5-6 days जो आप वो लोग झेल चुके थे, शायद वो उसी का रिव्यू मुझे दे रहे थे. And I was like, now I have landed, so there's, of course, and that's how the inflection was. That the first day was really interesting. I mean, I asked the wrong person, our academy captain that time. I asked him only like, may I know who is so and so? And he just gave me that look, and he's like, I'm the one. I'm like, okay, hi. After that, I got too much of ragda for that also. Madam was doing this and madam was doing that. Amazing. Good amount of ragda. Ragda has been an immense part of Fauj. Like I can relate.
like वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। शायद ना आपको तब नहीं समझ पाएगा ये क्यों हो रहा है, ये रात रात भर क्यों जगाया जा रहा है, क्यों हमारी इतनी रगड़ा पट्टी हो रही है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका क्या रीजन है, क्यों ये करना जरूरी है। और मैं कहूँगी मैं आई वाज इन द बेस्ट कॉन आई कैन से। आई एम फ्रॉम चिटनेस एंड all the chitness, all my course mates, they all can say that we got the best seniors in our life. seniors, like seniors are the saviors in academy. Like they treat you like kids literally. No? They carry you through when you commit mistakes, and then Yes. they are the biggest support, I think, there. So ma'am, initial days were good. And during that time, now the one more thing which you asked, that during that time when you say like all the course mates, we pull each other together. I mean, we pull each other. कि, okay, कैसे नहीं होगा, करो, साथ में करो. And it's like togetherness is very, I mean, important thing. And people, they always encourage you to, if you're not able to do something, they'll tell you, kar le, you can do it. We all encourage, each other, and we all were together. And in academy, you're not, you cannot be a single soul. You have to be you have to represent as a group. You cannot be like, okay, I did it, I finished it, I'll go. No, this cannot happen. If you do that also, then the entire, your spawn mates will get ragda for that also. So you have to finish it together, start it together. So it's like everything is together now. We sing and swing together वाला फंडा चलता है बहुत जगह. Yes. One for all yes. for one. Exactly. तो यहाँ पे जो भी बच्चे देख रहे हैं, who are all set to join courses, who are my students, who follow me or who follow ma'am. So yeah, life will not be easy in the academy, but you have to be mentally prepared because you will sail through it with the help of your seniors. So ma'am, yes, you will definitely, and seniors and your course mates. When you see, you look around. Okay, everybody is doing it. You're not the only one doing it. yes, Yes. People there, they are doing. Making up to do it. So easy. It's just initial 1 month time, which your body, your mentally, physically, emotionally, you take that. Okay, what is happening? वो इनिशियल फेज में सबको लगता है. आई थिंक मुझे भी लगता था कि यार कुछ ज्यादा हो रहा है या ज्यादा क्यों हो रहा है. ऐसा एक फेज आता है और वो हर किसी के साथ आता है. बट यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, क्योंकि ये फेज, दिस विल पास, राइट? एंड आफ्टर दैट, life is going to be very good, and this is required. That's why it is for. It's not for everyone. Yes, that's why it is a career that not false choose you. You do not choose false. So right, that's what they assess in SSB. Do you have it in you or you don't? yes. So if you have it in you, तो भाई पढ़ लो. और हम तो लाएंगे इंस्टीट्यूशनल ऑफिसर्स को, जिनकी जर्नी को देख के आप मोटिवेट होगे. जो भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं रिटन वगैरह नहीं पास हो रहा, तो यू गाइस कैन कम एंड टेक माय हेल्प इन एग्जाम्स. तो मैम आगे की चीजों के बारे में आपके सारे स्टूडेंट्स के पास तो आप हैं शिवम. आपके सारे स्टूडेंट्स के पास आप हैं, आपकी पूरी टीम है जो उन्हें कहते हैं ना, आप उन्हें एक सही से गाइड कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं एज गुरु, और आप उनको बता सकते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, दोनों ही बता सकते हैं. यस, एग्जैक्टली. तो इस बारे में एक चीज अगर मुझे ऐड करने से, मैम ने बोला कि एग्जाम्स में आपको ये तो जरूरी है कि क्या पढ़ना है, ये तो सबको ही बता देगा, बट ओनली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस मेंटर कैन टेल यू क्या नहीं पढ़ना. तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या छोड़ना है एग्जाम्स के लिए. आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता. डिफेंस एग्जाम्स आर नॉट एट ऑल टफ, एंड व्हेन आई टीच द स्टूडेंट्स, मैम मैं उनको यही बताता हूँ कि क्या छोड़ के जाना है, बिकॉज अल्टीमेटली यू गाइस विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम. और टाइम नहीं है मैम. आप भी जानते हो कि इन फौज आफ्टर 25 years of age you cannot join, and I think when you joined, तो कि मैंने जब आपका स्टोरी लगाया ना, I'll tell you that is a compliment for you कि मैम look so young, how early she came out. मैंने कहा यार she was in Air Force, she joined very early, she came out because she was an SSC officer. So मैंने कहा मैम ने जल्दी तैयारी चालू करी, she went inside जल्दी and then she went outside जल्दी also, and now she is also in the second innings of life. So this is what I want to say. I just turned 21 when I joined. I like 1 month, only gap was there. I turned 21 and I was there. I landed there in academy. And मेरे पास बच्चे हैं जो 24 साल के हो चुके हैं और अभी तक पेपर नहीं पास कर पा रहे हैं. तो सबका अपना टाइम होता है. All those kids जो नहीं कर पा रहे एग्जाम, भाई जल्दी से जल्दी कर लो. Yes, sooner the better. मेरा आपको कि
आफ्टर फर्स्ट टर्म ऑफ योर एफए टेन्योर, सेकंड टर्म तो स्मूथ हो गया होगा, मतलब फिर कैसा रहा जर्नी आपका एकेडमी में, और कुछ ऐसे कोई मेमोरी आपकी है जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहोगे? मेरी मेमोरीज बहुत है, मेरे बहुत सारे कोर्समेट्स they are also watching it and they must be laughing. There is a lot of stories. तो ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग कोर्स, She's not even telling you because you won't be able to relate why, when, kaise, kya. But I'll tell you something. And we go to Air Force Academy for 6 months. All the engineers, यस, those who are aspiring to join as technical officer in Indian Air Force, we go for 6 months to Air Force Academy, Hyderabad. Right after that, we go to AFTC, Air Force Technical College. Right there, we spend 1 year, and again we were junior there. Again, we land there and we become junior again. So it's like 1 year of good amount. It's going to be 6 months. We'll only get to leave after 1 year. Yes, that's true. 6 महीने का एफए में रगड़ा हुआ, फिर 6 महीने का एफटीसी में रगड़ा हुआ, देन यू गेट द फीलिंग ऑफ सीनियर्स. एफटीसी Yes. is basically called as Air Force Technical College. It's in Jalahali, Bangalore. All those people who are not watching it. So I'm an engineer myself. My second choice was always an aeronautical engineering branch because I am from mechanical. So all those people who are watching who want to join in flying, if you couldn't make the cut in flying, you can for ATC. You can switch for technical branches like AEM and AEL. And ma'am has been an AEL officer. So ma'am बताएंगी technical life के बारे में भी. तो मैम एएफटीसी का टेन्योर कैसा रहा आपका? हाउ वाज इट लाइक इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड द एकेडमी लाइफ? बहुत 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 ही अच्छा था. अभी उसका नाम है एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज. It's like college, but it's not college. It's not that kind of college where we all have come from colleges, but it's a different type of college because there we do our post grad in post graduation diploma in aeronautical यस, engineering. So full 1 year we do in the Air Force, whether it's radar, aircraft, missile, many others. You study about each and everything, and that is what we do there. And entire 1 year, along with your Ragda Patti, you will be studying really hard. And you'll go to all the classes, morning to evening, you'll have classes, projects, submissions, all of that. इट्स नॉट सो इजी whosoever is thinking कि यार ऐसे लाइफ You चलो. was thinking that, okay, once I give the exam, life is going to be like easy peasy in the sense, okay, no studies after that. It's a big myth, I'm telling you, because I also have a lot, I can say that. So please mark my words, you have to study there. Not only your Fauji padhai, wherein you have to study about the forces, war, thing, that thing, but along that you have to, upgrade. You have to upskill yourself. You'll be going for MTech or for some other course or something or the other, right? So in FOS, padhai is a never-ending process, I can say that. Whether you were an AFA, there also you study. You have to clear exams. If you don't clear exams, you will not go ahead, right? Again, in AFTC, you have to study very, very well, and you have to semester exam sort of pattern is there. You'll be 5, 6 subjects every time, and you will get exams, and then evaluation will happen, and you'll get a degree also. So you have to study. एग्जैक्टली. सो एएफए और जब आप एएफटीसी में जाते हो, व्हेन द ऑफिसर्स पास्ड आउट, तो वहां पे एक देयर इज अ सेइंग कॉल्ड थ्रू दीस पोर्टल्स पास द बेस्ट एरोनॉटिकल इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड. एंड आई थिंक I will thank you for that. yes. So these seniors of mine, basically, I feel very privileged to have these people as my seniors, and these guys are just a call away whenever I need them, so that I can tell people कि life in the Air Force or in any kind of technical branches of the Forge is not so rosy. You have to study. तो जो बच्चे पढ़ाई से भागते हैं हमेशा, मैं उनको यही बोलूंगा कि पढ़ना तो आपको पड़ेगा, because in terms of quality, Forge cannot compromise. है ना? So Yes, you have to study a lot. You have to be thorough professional because right after your training, you'll be posted to all different places, right? Handling your system, whether it's like weapon or your any electronic, circuitry, aircraft. So you have to be on top of everything because you need to know because it has किसी की जान का सवाल, right? exactly. You're in Air Force, सब कुछ सिर्फ एयरक्राफ्ट ही घूमते हुए नजर आते हैं. But to make that aircraft fly,
there are 100, it takes a village to make it happen, right? So all the additional, systems wherein you can also see, okay, radar, like, because I did my specialization in radar, right? So other system, communication, IT, this, that, RT, all of this is coming in play. Only then that aircraft is able to fly, right? So you have to be thorough professional. You have to be really, really good in what you do. We cannot afford to commit mistakes. So yeah, it's very important to study really well and learn the system. I can say that Air Force has got the best aeronautical engineers in the world because of people like you, like who are committed, who are dedicated, and the people who are looking this podcast or watching this podcast, I will say कि यार अच्छे से पढ़ाई करो because पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी and then to become a professional, जैसे मैम ने बोला कि thorough professional आपको बनना पड़ेगा, तो उसके लिए you need to study because all these things are technical, है ना? We as engineers, we are made to study till the last breath because technology is evolving and FOS always have the cutting edge of tech. As ma'am would agree on this thing, कि FOS always have cutting edge tech. जो आप आज देख रहे हो, फौज के पास वो बहुत साल पहले आ चुका था. तो आपको वो चीजों को अडेप्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. तो you keep on studying, keep on upgrading yourself, keep on honing your skills because once you landed in the academy, that thing will also help. So that is it, and you need to upskill. Yes. You keep upskilling also. Of course, FOJ bhi aapko karate hai. Air Force gives you so many chances, send you for different courses because whatever the new system is coming in, and I mean, the forces are using it. You have to, get trained on that. You have to study thoroughly, theoretically, practical knowledge, and all of that because tomorrow you'll be handling all those things, right? Exactly. So, ma'am, अभी आते हैं थोड़ा सा आपकी सर्विस लाइफ के बारे में. How was your tenure after you got commissioned? The day of your commissioning, you passed out that अंतिम पग. How was the feeling जब आप commission हुए? वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ. Wonderful, I would say, because we all, have that dream. Okay, when will that day come after the entire process of training? कब होगा वो जब हमारे shoulders पे भी ranks होंगे? कब हम वो ranks पहनेंगे और कहेंगे कि या आज हम class 1 gazetted officers बन गए हैं, right? और वो सबके लिए बहुत बहुत एक ऐसा मोमेंट होता है और स्पेशली आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट होता है. और वो प्राउड फीलिंग आप खुद से शायद इतना ना फील करो जितना आप अपने पेरेंट्स या फैमिली से कहते हैं that they are so proud of you. I think that particular, the moment, and especially your parents, you live for that very moment. That एक दिन मैं अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड फील कर पाऊँ कि वो मुझसे ये कहें कि बेटा, राइट. और वो सबके लाइफ में वो ऐसा मोमेंट होना चाहिए और होता है. और वी ऑल एम फॉर दैट कि हम यही तो करना चाहते हैं. हमारी शायद करियर चॉइसेस कुछ भी रहे लेकिन एम तो वही होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने दिल में भी होता है कि हमारे पेरेंट्स एक दिन हमें ये बोले कि यस, कि आई एम प्राउड ऑफ माय सन और माय डॉटर, राइट. दैट्स द थिंग. और इंजीनियर्स के केस में वो 2 बार होता है. आई वुड से दैट. इनफैक्ट माय फादर वाज लाइक, ओके, अभी एएफए में भी तो हुआ था, अब एफटीसी में भी होगा. इट्स ट्वाइस. सो वी गेट दैट चांस ट्वाइस. And we lived that moment twice because in AFA also and then AFTC also. Amazing, ma'am. Yeah. So yeah, that's wonderful. Indeed, the day is very amazing when many of my students when they call me from AFA. अब वो जो पहला वाला जो होता है ना, जब आप अंतिम पर क्रॉस कर लेते हो, and then they call me, sir, हो गया, sir, I made it, and then I make a video call. सब ऐसा होता है ना, कभी-कभी रोने वाली फीलिंग आ जाती है मेरे को भी. मैंने कहा यार बहुत ज्यादा वो मोमेंट मेरे लिए एसएसबी का जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, वो मोमेंट मेरे लिए तब था सबसे पहला. और ऑफ कोर्स व्हाइल दैट अंतिम पग मोमेंट वाज हैपनिंग, दैट आपकी हार्ट बीट इतनी तेज होती है कि शायद कि मेरी पूरी लाइफ उस एक मोमेंट में समराइज होती है कि यस, फॉर दिस डे ओनली आई लिव, I worked so hard for these many years. This is the best moment of my life till date. So, whosoever is watching, whosoever student aims to be an officer, desire to be an officer, please work hard. Please work upon your goals and dreams. Do not give up. ठीक है.
वो अगर तुम्हें उसमें कोई ब्लॉकर आ रहा है, यू कम टू मी, एग्जाम नहीं पास हो रहे हो, आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, बट यू डू नॉट गिव अप। इफ यू गिव अप, वो होगा ही नहीं, मोमेंट ही क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज उस तक जाने के लिए आपको यार फिर यू हैव टू टॉयल अ लॉट, यू हैव टू टेक पेन, यू हैव टू मुझे गो मुझे थ्रू। ना शिवम, एक बात सारे यंगस्टर्स जो जो शायद हमारा शो देख रहे हैं, उनसे एक एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, और जो शायद मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन लास्ट 10 years, आई मीन मोर देन 10 years नाउ, 13 years आई कैन से, आई हैव सीन इट हैपनिंग दैट इम्पेशेंट है आज का यूथ की, उन्हें क्विक रिजल्ट यस, चाहिए। ठीक है, लाइफ में हर चीज क्विक रिजल्ट की तरह नहीं मिलती। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने कुछ किया एंड इंस्टेंट आपका रिजल्ट आया। इट्स समथिंग, यू नो, इट टेक्स टाइम टू, यू नो, उसका फल मिलने में बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी। और यू डोंट हैव टू लीव दैट होप एंड ट्रस्ट एंड दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग, आपको उस पर लगे रहना है, आपको कोशिश करते रहना है, तभी आप शायद वहां पहुंच पाए। इफ यू आर रियली लकी इनफ कि ओके फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में हो गया, बहुत अच्छा है। बट अगर नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। You have to keep trying for that till the time you don't make it, and that consistency is required. You have to be disciplined, no other way. You have to be consistent. Determination बहुत चाहिए, और I think सबसे important है विल पावर चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अगर जब हमें फेलियर फेस होती है तो हमें लगता है कि अब ये नहीं होगा, एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये मैं नहीं कर सकता या कर सकती। ये तो सोचना ही नहीं है। मुझे मुझे लगता है कि आज के यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि अरे यार, दिस नॉट माई कप ऑफ टी। नो, दिस इज योर कप ऑफ टी। If you think that you can do it, you can do it. It's just that all it takes is that kind of belief in on your, I mean, in yourself. See, okay, I believe in it, that I can do it. I can make it happen. Whatever it takes, I will do every single thing. Right? Only then you will make it. सिर्फ सोचने से चीजें नहीं हो जाती, उन्हें कहीं ना कहीं अपने एक्शंस में लाना पड़ता है, और तभी हम शायद हमारे जो ड्रीम्स है, हमारा जो गोल है, हम तभी अचीव करते अमेजिंग वर्ड मैम, ये तो मैं शॉर्ट बनाऊंगा इसका, दिस विल गो वायरल। एंड मैम ने सही बोला कि, अब वही चीजें मैं बोलने भी वाला था, एंड मैंने बोली दी सारी चीजें कि इम्पेशेंट जो बच्चे हो रहे हैं ना आजकल, क्विक रिजल्ट्स के चक्कर में, कि यार एक बार में हो जाएगा, हम जाएंगे, वी विल जस्ट गो लाइक दैट एंड वी विल गेट सिलेक्टेड। दीज थिंग्स विल नॉट हैपन ओवरनाइट। जैसे मैम ने बोला कि मैम को फर्स्ट अटेम्प्ट में इंजरी हो गई, फिर वो वापस गई, उन्होंने वो चीजों पे काम किया कि यार मुझे गड़बड़ नहीं करनी। अगर वो उस मोमेंट पे डिसीजन ही नहीं लेती तो आज हम ये पॉडकास्ट ही नहीं कर रहे होते, कहानी कुछ और ही होती। हैं। हाँ, दैट ट्रू। तो या कहानी कुछ और होती है। मुझे एक चीज और लगती थी, और ये सारे शायद सारे अंश मुझे लगता था कि एक मैं ही हूँ शायद जो फौज में जाना चाहती है, या जिसका एम एयरफोर्स ज्वाइन करना है, राइट? The moment you land there, where in any exam center, you see so many people, the crowd, and you realize, okay, I'm not the only one in this whole world. Competition is really tough, and you have to be at par. You have to be the best to crack that. You have एग्जैक्टली, to have that uniqueness in you, so that you are selected. You have to be above them, राइट? तो अभी वो घर में बैठ के नहीं पता चलता कि दुनिया में और कितने लोग, हजारों लाखों लोग, वो एक वही सपना जो आप अपनी आंखों में लिए बैठे हो, वो कितने और लोग देख रहे हैं। और जब आप देखते हो कि दैट्स द रियल वर्ल्ड, competition is going to be really tough, and I think year by year it's getting tougher, right? यस, अभी तो बहुत है मैम, अभी तो बहुत टफ है, बिकॉज बहुत अभी है। अभी ऑनलाइन थिंग्स आर अवेलेबल, दीज गाइज आर, आपके टाइम पे इंटरनेट उतना पेनिट्रेट नहीं किया होगा जब आप तैयारी कर रहे नहीं। थे, आई वाज प्रिपेयरिंग तब भी उतना ज्यादा नहीं था। अभी एज अ टीचर व्हाट इज द मेन चैलेंज दैट आई फेस, मेरे को बच्चे जो क्वेरीज करते हैं, सर आई एम नॉट एबल टू फोकस, सर मैं इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करता रहता हूँ, मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखता रहता हूँ, सर मेरे को फोकस नहीं हो रहा है, बिकॉज दीज गाइज आर फार अवे फ्रॉम रियलिटी। they see a video of an officer of fighter aircraft flying, और उनको गूज बम्स आ गए, उसमें खुश हो लिए, दिमाग में चला लिया मैं ऑफिसर बन गया। जब पढ़ने बैठे, थोड़ी सी बोरियत हुई, किताबें बंद। तो दिस इज नॉट हाउ इट विल हैपन, यू टू पुट इन द हार्ड वर्क एंड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेडिकेशन। मैंने बोला ना कि कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट चाहिए, एक विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं, वो चाहिए आपको। और आज के टाइम में विद सो मच एक्सपोजर, लाइक सोशल मीडिया स्पेशली, सोशल मीडिया, एक बूंद भी है, एंड देन यू नो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट, द पॉजिटिव नेगेटिव बोथ चीजें, बोथ द थिंग्स आर देयर। स्पेशली यूथ को ये समझाना कि कोई चीज कितना और कितनी लिमिट में अच्छी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये हर 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 सारे मैं यंगस्टर्स के लिए बोल सकती हूँ, इनफैक्ट मेरी छोटी बेटी के लिए भी बोल सकती हूँ।
उन्हें ये चीज रियलाइज करवाना कि क्यों और कितना, और वो कंट्रोल, वो सेल्फ कंट्रोल चाहिए उसके लिए। ये नहीं कि कोई आपके सर पे बैठ के आपको बोलेगा कि नहीं यू कैन नॉट डू दिस, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन, ओनली देन इट विल हैपन। बिकॉज अगर आपको कोई फोर्सफुली ये बोले कि नहीं नहीं आप पूरा दिन मोबाइल नहीं देखोगे या सोशल मीडिया पे नहीं एक बार भी विजिट नहीं करोगे, इट इज गोइंग टू बी टू, इट्स गोइंग टू बी लाइक टू मच ऑफ बर्डन फॉर देम, एंड इट्स लाइक अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं देन यू हैव टू, और वो ज्यादा एंटाइज करती है वो चीज जब आपको किसी चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना अभी मेंटली आपको स्ट्रांग होने की, और अपने इमोशंस को, कि आपकी चाह है कि नहीं अरे मैं देख लूं, या मैं अच्छा अभी किसने क्या रील डाला है या किसने क्या पोस्ट किया है। एंड थैंकफुली एंड हमारे टाइम पे ये सारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। नाउ टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वेदर इट्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्टेटस, दिस दैट एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट। इतने डिस्ट्रैक्शंस के बाद अपने आप को एक एक कहते हैं ना एक एम के लिए कॉन्सेंट्रेट, अपने दिमाग को कहीं कॉन्सेंट्रेटेड रखना बहुत बहुत मुश्किल है। और आई थिंक दिस इज वेयर यू नो योर विल पावर कम्स इन प्लेस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग विल पावर। आई हैव सीन, आई नो मेनी पीपल, दे हैव लाइक literally not thrown, but they have like kept their phone in the cupboard, and like for 1 year or so, or whatever time period, they will not even look at it. It's that, because that is going to be the biggest distraction, and distractions you just can't afford at this point of time. जैसे आपकी लाइफ का इतना क्रूशियल टाइम है, आप अगर एक साल आप अगर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये नहीं करोगे, लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला। आपके जो जितना आपको जानना चाहिए वो सारे अपडेट्स आपके फैमिली आपको दे देगी, उसके लिए आपको वहां उस प्लेटफॉर्म पे होने की जरूरत नहीं है। और रही बात की, अगर अब मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीजें अभी ऑनलाइन हो गई हैं, आपकी क्लासेस ऑनलाइन है, तो उतना ही यूज करिए आप। तो उसके लिए क्या चाहिए? विल पावर चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, और वो इतनी चाहिए, और इट शुड कम फ्रॉम विद इन। जब तक वो आपके खुद के अंदर से नहीं आएगी ना, आपको कोई कुछ भी कह ले, आपके पेरेंट्स आपको कितना भी रिस्ट्रिक्ट कर लें, आपका ध्यान आपकी पढ़ाई में और आपके एम के लिए नहीं हो सकता। इंडीड मैम, अमेजिंग। एंड ये सही बात आपने बिल्कुल बोली है कि सेल्फ कंट्रोल इज द की। विल पावर और सेल्फ कंट्रोल ये दो चीजें हैं। अगर कोई बच्चा अपने आप को केवल 6 months to 1 year डेडिकेशन और फोकस के साथ लगा पाता है, क्योंकि अभी डिस्ट्रैक्शंस की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं भी बच्चों को मैम पढ़ाता हूँ, तो माय क्लासेस आर बेसिकली ऑनलाइन, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, वंस यू आर डन विद द क्लासेस, प्लीज इसका एक बार 2x पे देख लो, रिवीजन कर लो, और उसके बाद चुपचाप सो जाओ। ज्यादा स्क्रॉल मत करो, यूट्यूब मत देखो, इंस्टाग्राम मत देखो, बिकॉज यू गाइज विल एंड अप वेस्टिंग टाइम। आपको पता है एआई काम करता है, इंस्टाग्राम हो गया या उस पे आप जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करोगे, वो उसी तरीके का कंटेंट आपको दिखाता चला जाएगा, आपको पता भी Yes, नहीं that's लगेगा। how they're pulling the audience. And you are that audience sitting there, you know, cozily watching all the reels and wasting your time, not sleeping, not concentrating what you are supposed to do at this point of time and this age of your life, time. I mean, this life, right? So that's the biggest, I think that needs to be restricted if you want to have that, you know, aim, your aim, your goal, whatever, that can only be achieved by that. Yeah. I think that's the today's problem is biggest problem is social media. एंड ये सेशन जो बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, आई विल गिव यू दिस रिकॉर्डिंग आल्सो, दिस विल गो ऑन यूट्यूब एज वेल। और मैम ने काफी सारी चीजें बताई, आई होप तुम मैम को प्राउड फील कराओगे एक दिन सारे बच्चे, और मैम की गाइडेंस को फॉलो करोगे। अब मैम सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, you was in the Air Force, you got commissioned as an officer. How was your life as an officer? Like कि मैं इतना ज्यादा ऑपरेशनल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बिकॉज दैट इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड फॉर दीज किड्स, बट हाउ वाज योर लाइफ एज एन ऑफिसर? व्हाट डिड यू फेल्ट आफ्टर यू बिकेम एन ऑफिसर इन द सोसाइटी, फैमिली साइड पे, आपके दोस्तों में, आपके कॉलेज मतलब कॉलेज वाले जो दोस्त होते हैं हमारे, हाउ वाज इट? Wonderful experience because I did okay in 10 years, 3 postings. First one was Bangalore. I was here for my aeronautical engineering. I did my specialization here in Bangalore, and again I got posted to Bangalore only. So I spent 6 years in Bangalore, I can say that. And right after Bangalore, I got posted to Shillong, amazing place again, 2 years there. And after that, I got posted to Delhi, which was my last posting, or I can say my home posting, right? And those 10 years of my life, that was a wonderful period of my life. Because आपकी ट्रेनिंग आपको जो बनाती है उससे कहीं ज्यादा आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उन 10 सालों का, आप एक you're a different personality altogether, honestly, because the kind of decisions you make,
आप जब एज एन ऑफिसर आप कहीं पोस्टेड होते हो, आपका एक सेक्शन या डिपार्टमेंट आपको दिया जाता है, दिस इज व्हाट योर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज व्हाट यू आर बी हैंडलिंग, दिस इज व्हाट यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ फ्रॉम नाउ ऑन. People look up to you. I'll not say people under me. I'll say people, those who work with me, all the corporal, sergeant, or all the men there, the jawans जो भी हैं या officers, आपके junior officers, senior, they look up to you, and you have to always lead by example. You cannot say, oh, do this. Till the time, if you are not doing it as an officer, you cannot expect सामने वाला to do everything, right? And I always used to say, and after a time it became a one-liner, and everybody knew that Jyoti ma'am is going to say that when I can do it, you can very well do it. that was a phase कि मेरा हर चीज में एक ही जवाब होता था कि मैं पहले खुद करती थी. I can do it, you can very well do it. Right? Sometimes ऐसी सिचुएशंस होती कि मैम ये कैसे होगा, अरे कैसे क्यों नहीं होगा, ऐसे होगा. You do it, you prove it, and then you do it. Right? और वो जो एक चीज होती है ना कि आप अफसर हो जाते हो, आप काम रियल वर्ल्ड में आ जाते हो, बेसिकली द रियल फॉर्स वेयर इन अब अकेडमी ट्रेनिंग सब छूट जाता है. अब वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, यू गेट पोस्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस. वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. आपको सब कुछ करने को मिलता है आपकी लाइफ के. और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपके, अगर मेरी स्पेशलाइजेशन रडार में है तो मैं सिर्फ रडार दूंगी, वो तो मैं देखूंगी, वो तो फिक्स्ड है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट है. Along with that, you'll be handling many other things, whether it's ADM or sometimes it's other, non-technical. As a secondary duty, you'll be handling all of that. Everybody does that, and you will be. That's why you'll be jack of all trades. You are master of one, but you will be jack of all trades. That is true. And your family, your friends, सबसे अच्छा लगता है the kind of respect you get when you go back home. When people come and meet you, whether they're, your friends, your family, extended family, all your relatives and everybody, the kind of respect they have for you, it's totally different. They look up to you, okay, some sense is going to come from that person, right? जो बोलेगी कुछ अच्छा ही बोलेगी, because आप अपने workplace पे you are taking decisions, and that one single decision is going to affect many things, whether people working with you, their life, their work, and of course your system you're responsible for. So one single decision, you have to be very, very clear that what are you doing, why are you taking the decision. Yes, you have to be really very sure about what you do, because you're answerable to so many people, to your seniors, to your superior, to your subordinates, to your juniors, and everybody down the line. So you cannot afford to have, you can't afford a mistake. So you have to be really very sure about it. And when you take such decisions in your life, in your workplace, and the same reflects in your personal life too, that you're confident, because और आप इतना कैलकुलेटिव लेते हो कि आपका हर मूव शायद कैलकुलेटिव होता है कि अगर मैंने ये किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं, और अगर ये हो गया क्या वो रिवर्ट बैक हो सकता है. Always think on those lines. If this cannot be reverted, then how much damage is this going to cause? That's very important again. So respect जब आपको अब दिखती है ना सबकी आंखों में, वो बहुत अच्छी लगती है, और वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है. वो आपको day one ही पता चल जाएगी जब आपकी कमिशनिंग होती है, आपके शोल्डर्स पर रैंक्स लगते हैं, फर्स्ट में तो आई कैन से रैंक्स लगते हैं, आपकी पिपिंग होती है, एंड देन the first reaction is of course your parents, right, your family, your brother, sister, whoever, and after that all your relatives, your friends, when you make them proud and they proudly say, okay, so and so because of the hard work, right? And I still remember, tell you something, many of my friends are watching this, my college friends, and they can 100% they will write, I think after that they're still on the line. When I was in college, it's a very, this is called, I can just give you my example, because if I want to do something at any cost, I will do it. That's my way of doing it. This is what my attitude is, and till date, that this is what I follow, and my attitude is. So when I was college, so of course पता था कि technical branch मुझे जाना है, मुझे aircraft में नहीं जाना था honestly, because I'm a height phobia, मुझे बहुत डर लगता है, और ये एक सच है कि मुझे थोड़ा डर उस चीज से लगता है. तो मुझे
ये था कि मुझे फ्लाइंग में तो बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, मैं टेक्निकल ऑफिसर या ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर ही बनना है मुझे। और इतना एक्सपोजर मुझे घर से मिल चुका था कि क्या किसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है क्या नहीं है। तो जब मैं कॉलेज में थी और ये था कि अच्छा ईकेटी एग्जाम होता है जिसमें आपकी पूरी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट की जाती है, तो सच्चा मेरे घर में एक डेस्कटॉप था और मैं गूगल करती थी कि ओके क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या या किस तरह का एग्जाम होता है, किस फील्ड से क्या क्या पूछा जाता है, क्या आपको कवर करना है, या क्या आपको अच्छे से आना चाहिए, या कहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि 4 साल में आप इतना सब कुछ पढ़ते हो कि हर चीज आप नहीं कवर कर सकते। तो वो सब करते करते कुछ प्रीवियस एग्जाम, आप हर कोई ये देखता है अच्छा लास्ट ईयर क्या आए थे या कितना डेटाबेस अवेलेबल है, राइट। ऑन दैट बेसिस आई केम टू नो जॉर्ज कैनेडी की बुक से एग्जाम आता है, राइट। तो मैंने उसे एक एक लाइन पढ़ना शुरू किया। उसके एंड में, हर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते थे मैं उन्हें सॉल्व करती थी। और the funniest part, or I think all my college mates used to curse me for that. Honestly, they used to curse me for that. क्योंकि मैं जब भी वो लोग करते थे ना, ओके लेट्स डू मास बंक, और मैं हाँ 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 करती थी कि हाँ हाँ करते हैं। और मेरा उसमें एक हिडन वो होता था कि जब पूरा बंक हो लिटरली कर्स करते थे, क्योंकि मैं हाँ हाँ करने के बाद आई used to come every day, and I can say that school and my college 100% attendance award goes to me. Not a single day I missed my college or my school, except I mean कि मैं बहुत हो गई, that's a separate thing. No bunk till date, no, yeah, I can say that no bunk ever. And पूरा क्लास बंक पे जा रहा है, बट एक स्टूडेंट आती है, ओके ज्योति रानी आएंगी, और उसका रीजन होता था इनफैक्ट माय प्रोफेसर यूज्ड टू आस्क कि पूरी क्लास नहीं आती, तुम क्यों आती है। तो मेरा, और फिर मैंने एक्सप्लेन किया द रीजन बिहाइंड दिस इज व्हेन नोबडी इज कमिंग यू आर फ्री। आई हैव सो मेनी doubts in my book because I have to prepare for my exam, and entire college knew that time that I'm going to appear for this, my aim is this। और मेरे दिमाग में आई थिंक 24 घंटे 24/7 सोते जागते उठते बैठते सिर्फ एक ही चीज मेरे माइंड में होती है, दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, नथिंग एल्स। और मैं अपने सारे जो मेरे डाउट्स होते थे, जो क्वेश्चंस अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाई या मेरे को कुछ सीखना है पढ़ना है, तो मैं, मेरे पास वो सारे प्रोफेसर खाली हैं थे, तो मैं वो टाइम को यूज करती। और ये मेरे को उसके बाद ऑफ कोर्स मेरे जितने भी कोर्समेट्स थे, कॉलेज के थे, मेरे क्लासमेट्स थे, दे यूज्ड टू लिटरली कर्स मी फॉर दिस बिकॉज ऑफ यू। हमारा पूरा कभी 100% मार्क्स बंक नहीं होता। व्हाई डू यू कम एवरी डे? आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट, आई नो यू विल कर्स मी फॉर दैट, बट द थिंग इज अगर मैं ये नहीं करूंगी यार, इट्स अबाउट माई लाइफ, मेरा पूरा करियर है स्टेक पे, और मैं अगर इस चीज को नहीं करूंगी ना, हु एल्स विल डू। ये बंक पूरी लाइफ पड़ी है ये सब करने के लिए, बट अगर वो नहीं किया जो अभी करने की जरूरत है, और आई थिंक दैट वाज माय टाइम एंड आई यूटिलाइज्ड इट फुली। Yes, ma'am. I think you did justice to the engineering side. This is what I feel. आई थिंक एंड वो पूरा बुक मैंने पढ़ा था, और आई थिंक दैट वाज द रीजन दैट आई कुड क्लियर दैट ईकेटी एग्जाम इन फर्स्ट गो। एंड I think I'm really thankful to all my professors, those who helped me during that time, and to all my course mates. Because of that bunk, I could get that kind of time. कि मेरे पास पूरा दिन होता था। आप सोचिए कि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, पूरा शाम तक का टाइम है, आप क्या कुछ नहीं कर सकते उसमें। Yes, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, आपको जो कर पढ़ना है, जो सीखना है, आप करिए ना। Who is stopping you? आपको लगता है कि अरे नहीं यार मेरे कोर्स में क्या, who cares? और उस टाइम पे अगर आपने यही केयर करना है तो आप शायद लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे। You have to be little selfish that time, because you're just, it's not that you're thinking about yourself, but it's about your career, your goal, because your goal is everything for you. I have always been like that, sorry. But you have to think about yourself. नहीं, कभी एक मोमेंट ऑफ लाइफ पे तो आके सेल्फिशनेस मैम दिखानी पड़ेगी, बिकॉज करियर इज द, आई थिंक ऐसी चीज जिस पे आप मजाक नहीं कर सकते, यू हैव टू बी वेरी सीरियस, बिकॉज फ्यू And I was damn serious. Yes, all my professors, that's why I'm saying entire college knew, all my college mates, my batch, the entire batch, all branches, all professors, everybody knew that Jyoti has only one thing in mind, कि यही करती है। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स जो मेरे थे, मैं उनको छोड़ के कि यार मुझे पढ़ना है, या मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे यहाँ ध्यान देना, तो शायद वो उस टाइम पे उन्हें लगता था कि यार तू हमें छोड़ देती है, या तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती है, या ये नहीं करती है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो इस बात को समझते थे, और आई थिंक वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सच फ्रेंड्स इन माय लाइफ
those who could understand this. Because my aim is this. This is what is my aim. This is how I want my life to be. And you can be whatever you want to be. मैम पढ़ाई का कवर ले रहे हो अपने दोस्तों को, वो आपको पकड़ेंगे देखना लाइव सेशन के बाद। नहीं, बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत माई मदर इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, आई मस्ट से दैट, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ी हूँ, मेरा स्कूल और मेरी मदर, बिकॉज शी वॉज अ टीचर, राइट, मेरी मदर मेरे नर्सरी से 12th तक मेरे साथ थी, सेम स्कूल, ठीक है। एंड यू हैव, my mother was literally really very strict, very very strict, and I'm really glad and thankful that she was strict. उन्होंने हमें एक ट्रैक से इधर से उधर भी नहीं होने दिया है, both of us, my brother and I both. आंटी वो कहीं ना कहीं पे ऑफ होती है कि अगर आप इतने पढ़ाई करनी है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, बहुत ही एकदम कहते हैं ना, दुनिया पता ही ना हो आपको, सिर्फ इसके अलावा कि आपका घर का है, आपका स्कूल का है और आपके ये फैमिली है, दैट्स इट, या आपकी गिनती के 4 फ्रेंड्स हैं, राइट। तो शायद वो स्टार्टिंग से शुरू हो गया था, और इसीलिए एक डिसिप्लिन एक ऐसी चीज थी। और मुझे टाइमिंग्स को लेके बहुत वो रहता है, क्योंकि when you aim to join forces, your timings have to be, I mean, really good. You can't be late and still have that thing. Even now I work in corporate and everybody says, you always reach before. I mean, before time. You always there. And I expect the same from, the other person. But the civil world is not same. No. My expectations are really, really high from them. Okay, I was built before time. I was like 10, 15 minutes. And nobody's there. People are like walking in after 10 minutes. Right? And I was always like that, and they used to like, why Jyoti? Even college में भी यही होता था कि मुझे हमेशा, अगर मैंने बोला है 9 बजे, मतलब शार्प 9 बजे, and people will come at 9:30, like why? बहुत सारी ट्रेन छूटी है मैं हमारी इसी चक्कर में कि मैं वहाँ 9 बजे से हूँ और लोग आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं 9:30 से, तो आप क्या कर सकते हो? You have to catch another train. And used to be really angry on them. Why can't you come on time? Why can't you do this? And they used to, तुझे फौज में जाना है, हमें नहीं जाना है. So sometimes you have to take an individual call, because I think when I was preparing, so in my whole batch of engineering, I was the only one who wanted to join the forces, and they used to call me fighter. मतलब उन्होंने अलग ही nomenclature ही कर दिया था, because I was giving my NDA exam. No, same here. I was the only single soul who wanted to join Air Force, or I mean Army or Air Force. Navy मेरा कभी नहीं था, honestly. Army or Air Force was my first love. So thankfully, by God's grace, I got that. And right after that, one of my coursemate also, he joined Navy, right? So only 2 of us, I mean, from our course. So मैम एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपने बच्चों को मेरा मैसेज लास्ट क्वेश्चन होता है, बच्चों को क्या मैसेज आप देना चाहते हो, जो आपने दे दिया। मेरा एक क्वेश्चन है, दैट इज एकदम हार्ट टू हार्ट, फ्रॉम एन इंजीनियर टू अनदर इंजीनियर, कि बीटेक वाले बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर बीटेक्स, एंड इंजीनियर्स को आप क्या बोलना चाहोगे? आजकल के इंजीनियरिंग वाले बच्चे अलग अलग डोमेन्स में जा रहे हैं, व्हाट फॉज गिव्स देम एज अ टेक्निकल ऑफिसर, या एयर फोर्स पर्टिकुलरली आप सर्व किए एज एन टेक्निकल ऑफिसर, व्हाट वुड बी द मैसेज ऑफ योर्स? क्या गाइडलाइंस आप उनको देना चाहोगे, सो दैट दीस गाइज आर ऑन द राइट ट्रैक एंड देन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन? Okay. See, graduation आपने बीटेक किया है, right? Whether you choose computer science or electronics or electrical or mechanical, you will definitely be going there as a technical officer, right? Especially if you're like few restrictions wherein if you are an AEM officer, mechanical, branch आपने, because आपका engineering आपका mechanical branch में है, so आप या तो aircraft handle करेंगे या weapon system, handle करेंगे. But for all the AEL, those who did in electronics or electrical or IT, computers, in those fields, they can also go for aircraft. But apart from that, they have radar, they have, communication systems, they have many other, systems in IT, of course. And you get to choose also. Somewhere when you go to AFTC, and after that, after branching hota hai ki, okay, you'll be specialized in so and so, system, right? This particular system पे आपको specialize किया जाएगा, another 6 months of training period. So for
it's a 2 years long training period, honestly. 6 months in AFA, 1 year in AFTC, and right after that, your specialization. Right, so it's like 2 years process, and which you'll be doing in like training, and after that you get posted to different places. So आपको अभी से वो शायद वो पॉइंट अभी है ही नहीं, वो पॉइंट आपका आएगा जब आप एएफटीसी में होंगे और जब व्हेन यू कम टू नो अबाउट ऑल द ब्रांचेस. ओके, एयरफोर्स में ये भी सिस्टम है, ये भी है, ये भी है और ये भी है. आपका इंटरेस्ट कहाँ, आप कहाँ अपने आप को स्पेशलाइज करना चाहते हो. आपकी परफॉर्मेंस और आपकी खुद की विल दोनों मैटर करती है, और ये डिसीजन होता है ऑफ कोर्स आपके सीनियर्स लेते हैं. सीनियर्स आपके और जितने भी प्रॉप्स होंगे, प्रॉप वो भी और एयरफोर्स ऑफिसर्स ही होते हैं, वो मैनेजमेंट लेवल पे लिया जाता है. ओके, दिस इज द विल ऑफ द ऑफिसर एंड दिस इज हाउ द ट्रैक रिकॉर्ड इज. सो एंड सो इज गुड इन व्हाट, राइट. आपके जितने भी अपने आप पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे, कोर्स करेंगे, उसमें आपके मार्क्स होंगे, आपने कहाँ परफॉर्म अच्छा किया है या फिट किस चीज के लिए है, आपका इंटरेस्ट ऑफ कोर्स वो भी बहुत मैटर करता है. On that basis, they give you branches. I mean, branches in the specialization in which you are going to be specialized. Yes, So that has to be, you have to really perform well in AFTs, and you have to be like very clear with your mentor. You'll be assigned, you'll be doing some projects. You have to be careful about choosing which project you want to work in, and who's going to be, and you have to be vocal enough to say, okay, this is what my interest is, this is what I want to do, this is what I intend to do, and I see this is where I can excel, right. अगर मेरा एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो मैं एयरक्राफ्ट चूज करूंगी, या मेरा रडार में था तो मैंने रडार चूज किया. अगर आपका आईटी में इंटरेस्ट है तो आप आईटी सिस्टम पूरा चूज करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपकी ट्रेनिंग होगी. आप right after that you'll be posted and that officer, the specialized officer. exactly. So thank you so much इतना elaborated चीजों को बताने के लिए, and that was much needed. This was the question that I wanted to ask from some medical officers very long time, and then I'm really grateful that you joined, and thank you so much. एक चीज और मैं लास्ट में कहना चाहूंगी, जो आपने मेरे से एक चीज पूछी थी कि एक मैसेज है जो आपने अभी ऑलरेडी दे दिया है कि आप सारे जो यंगस्टर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो एस्पायर करते हैं कि हमें फौज ज्वाइन करनी है, उनको क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और आई थिंक बहुत रेलेवेंट है इन टुडेज टाइम, व्हिच आई वांट टू टेल एवरीवन. कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में, राइट, ठीक है, आज की डिस्ट्रैक्शन के बारे में हमने बात की, सब हर चीज के बारे में बात की, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जब ये सब कर रहे हैं, आपने कहा कि मुझे ये बनना है, इस पॉइंट पे ये करना है, बहुत सारे लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सपोर्टिव नहीं होते. या फौज की ज्वाइन करनी है, या फौज में ऐसा होता है, या फौज इज रियली टफ, या फौज इज दैट, और बहुत सारे कमेंट्स, या आपको कमेंट्स ही मैं कह सकती हूँ, इस तरह का रिएक्शन भी होता है द मोमेंट यू से कि ओके आई वांट टू जॉइन फौज, स्पेशली फॉर गर्ल्स. I can say that world has not changed that much, especially for girls, and it is said, okay यार तुम लड़की हो, फौज में क्या करोगे. कमेंट्स होते हैं जो आप डे टू डे बेसिस पे सुनते हैं, कहीं ना कहीं से आपको वो होती है. तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है उस सब पे. लेट योर एक्शन स्पीक, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट. सो यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट, योर विल विद योर एक्शन. आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना उस नेगेटिविटी पे जो भी आ रही है. मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों से और ऐसी बातों से आपको कोई रिएक्ट नहीं करना है, आपको कोई लड़ना नहीं है. तो कहते हैं ना, चूज योर बैटल्स वाइजली. तो वो आपकी लड़ाई नहीं है, और पॉइंट भी नहीं है आपको किसी से आपको बहस करनी है. बहुत शांत रहना है, बट ऐसे लोगों से दूर रहना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना वो चीजें प्ले करती हैं. ओ यार, कि उसने मुझे ये बोल दिया, तुम नहीं कर पाओगे या कर पाओगी, ये तुम्हारे लिए नहीं, क्या होगा, देखा नहीं हुआ. और स्पेशली तब नेगेटिविटी ज्यादा आती है जब अगर आपका एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तब ज्यादा कहीं ना कहीं वो होते हैं. वो इंडियन सिस्टम में बिल्ड है कि कहीं ना कहीं आपको लोग इस तरह की बातें करेंगे और बोलेंगे कि ओ आपसे ये नहीं हुआ, अरे छोड़ दो, डोंट गिव अप, डोंट लिसन टू देम, आई एम टेलिंग यू. वो नेगेटिविटी और नेगेटिव लोग उस टाइम के लिए उनसे बिल्कुल जितना आप दूर रह सकते हैं दूर रहिए, क्योंकि वो आपके माइंड पे प्ले करते हैं, और आपको उस टाइम पे नेगेटिविटी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है. वो एटीट्यूड की क्यों नहीं होगा, क्या होगा, और मैं करके रहूंगी. और इनफैक्ट आपको जो नेगेटिविटी होती है ना, उसको रिवर्स वे में प्ले करना चाहिए अपने लिए.
your favor, that you have to now prove it like more than you wanted to, that I can do this and I can prove them wrong. And it always works for me. So that's why I'm telling you, when somebody says something negative to me, so I think मेरा तो और जोश बढ़ जाता है. Honestly, जितना मुझे positive feedback से नहीं मिलता, because any negative comment hits here. More than your heart, it hits here. It must hit in your head. That okay, अगर किसी ने मुझे कहा है कि क्यों कहा, I have to prove that person wrong, and I will prove it within trust. So that kind of attitude is required. लड़ना बिल्कुल नहीं है. या तो दूर रहो, या उस नेगेटिविटी को चैनलाइज करो अ पॉजिटिव वे में, अपने काम में, अपने एम पर फोकस करने में. Exactly. Amazing words of wisdom, I can say. बहुत अच्छी एडवाइस आपने दिया, and I think these kids will implement it in their real life. Naysayers और जो लोग आपको हताशा देते हैं, निराश करते हैं, people expect result in 1 attempt, 2 attempt. आपको जितने अटेम्प्ट लेने आप लो, बट आप गिव अप मत करो और नेगेटिव लोगों से दूर रहो. Yeah, it's not 2 minutes Maggie that it will get ready in 2 minutes. Yes, life is not a Maggie. समय लो, चीजों को ग्रेवी की तरह एकदम पकाओ, then you will become or emerge out as a victorious person. And then it was an amazing and wonderful session with Jyoti ma'am. And Jyoti ma'am, we will connect again. Yes. Thank you so much, Shivam. Thank you everyone. I really wish कि मैंने जो कुछ भी आज शेयर किया वो आपके सारे कहीं ना कहीं लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट दे, और वो चीजों को याद रखे कि कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में राइट चीजें चूज करना. और स्पेशली जब आप होते हो, दोस्त हैं, दोस्ती यारी है, फ्रेंडशिप है, ट्रू फ्रेंडशिप है, बट लाइफ भी इम्पोर्टेंट है. आई थिंक मोर देन दैट, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स है वो हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, वेदर यू डू गुड और बैड, or whether you leave them for some time and then again reconnect, they will always support you in every situation, right? Yes, thank you so much ma'am, thank you so much for this amazing session, for your time. I'm really humbled, really Thank you so much. Jai Hind. Thank you so much.